नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड से चलो दोस्तों, अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरें देखते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है लिफ्ट ऑफ फॉर प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 5 और ये रिलेटेड है पेपर 3 स्पेस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट विक्रम एस एंड इट्स रेलेवेंस फॉर इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें तो इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट एंड द लॉन्च व्हीकल हैज बीन नेम्ड विक्रम एज ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लेट विक्रम साराभाई, राइट? Our next important headline is impose cost on nations which back terror. PM targets Pakistan and China. It is available on page number 5 और ये related है paper 3 internal security से। In this article we have to know about the outcomes of no money for terror conference। तो friends, इसको भी हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें फ्रेंड्स, तो recently at the conference Prime Minister Narendra Modi strongly asked for avoiding any ambiguity in dealing with terrorism and also warned against nations that use terrorism as a tool of foreign policy. It has been highlighted that only a uniform, unified and zero tolerance approach can defeat terrorism, and there must be a cost imposed upon countries that support terrorism, right? Our next important headline is new draft privacy law eases cross-border flow of data, hike penalties for breach. It is available on page number 5 और ये रिलेटेड है पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से। In this article, we have to know about the features and objectives of the Digital Personal Data Protection Bill 2022. So friends, key provisions of the revamped Data Protection Bill are easing cross-border data flows, hiking penalties for data breaches and non-compliance, allowing the government to exempt state agencies from the law in the interest of national security, right? Our next important headline is filling holes in safety nets. It is available on page number 14 और ये related है paper 3 economy section से। In this article, we have to know what are the effective approaches for financial consumer protection in the digital age and why regulators must take a coordinated approach to protect financial consumers, right? तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट? आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो दिस ईयर G20 एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिलीज्ड अ ड्राफ्ट of the proposed revision to their 2011 high-level principles on financial consumer protection, and recently fourth finance ministers and central bank governors meeting endorsed these principles, right? तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल पूरा बेस्ड है, ठीक? Our next important headline is global task on India's table. It is available on page number 15 और ये related है paper 2 international grouping से। In this article we have to know what does G20 presidency mean for India, India's action plan and key analysis and way ahead। तो दोस्तों, इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत शानदार तरीके से कवर किया गया है, लिंक यूनो की कहां मिलेगा। इसके अलावा आप इस आर्टिकल को भी गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज पिक द विनर्स। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 15 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, recent developments, emerging issues and what steps need to be taken in this context। तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, राइट? अगर हम ओवरव्यू देखें, इन दिस आर्टिकल इट हैज बीन हाइलाइटेड दैट सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज टू बी नुआंस्ड, मल्टीफैसेटेड एंड विजिलेंट इन इट्स डिसिप्लिनिंग फंक्शंस, and the policy must focus on small and medium scale firms and encourage green products and service to generate jobs, right? Our next important headline is a world without nukes. It is available on page number 15. ये related है paper 3 nuclear technology से। In this article we have to know about nuclear weapon, issues linked to nuclear weapons, international jurisprudence and the general attitude among countries about existing nuclear and arms related treaties, India's nuclear doctrine and conclusion and way ahead। तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है और लिंक यू नो कि कहां मिलेगा। उसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल से भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम ओवरव्यू देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स आर द मोस्ट डेंजरस वेपन्स ऑन द अर्थ एंड they can destroy a whole city, potentially killing millions and jeopardizing the natural environment and lives of future generations through its long-term catastrophic effects, right? Our next and last important headline is narco test. It is available on page number 17 और ये related है paper 3 science and technology से। In this article we have to know about narco test and Supreme Court's observations. Friends, in a narco test, a drug called sodium pentothal is injected into the body of the accused, which transports them to a hypnotic or sedated state in which their imagination is neutralized. In this hypnotic state,
the accused is understood as being incapable of lying and is expected to divulge information that is true, right? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखी फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग and polygraph test cannot be conducted on any person without his or her consent, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.